So let us start the session. Today we are going to start chapter number 9, Forces and Laws of Motion, session number 1. So let us start with the first topic, force, the introduction part. See, when we want to open the door, what we have to do? अगर मान लो डोर को ओपन करना है, लैच खोल के हम लोग ओपन करते हैं, तो वी हैव टू पुश द डोर हैंडल. ओके, डोर हैंडल को पुश करना है. And when we want to close the door, we have to pull the door handle with our hand, right? Otherwise वो open और close होगा क्या? नहीं होगा. So that means to move a body or any object, it has either to be pushed or pulled. This is clear? Yes, sir. Right. So this pushing and pulling of a body, yeah, a push or a pull on a body is called nothing but it is called force. Okay, and the direction in which body is pushed or pulled is called the direction of force. See this example. A boy is pushing the trolley. So this is the uh, direction of force in which the body is pushed. Okay, the direction in which the body is pushed. Now, if suppose we are pulling any object, so the direction is this one. जिस डायरेक्शन में वो पुल कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा. ओके, a push or a pull on an object is called force. This is very important, right? So now we are moving toward the next slide. Forces are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting, pressing. सब जगह force use होता है. We'll see one example. Okay, suppose if we push a football or kick a football, then again force is used. If suppose we pull the drawer of a table, okay, then also force is used. And suppose if you want to lift any object from the floor, or we have to lift the box, then again force is used. These are all examples only. Okay, and suppose if you want to stretch the rubber band अगर मान लो book में लगाना है, so we have to stretch. Again for stretching we have to use force. And suppose I want to squeeze the wet cloth to remove the water or to squeeze out the water. Again for that also force is required, right? And if I want to press the brake pedal of a car or of a bike, then also force is required. Okay, and the very good example, the fallen leaves of trees fly away with wind because the force of wind pushes them away. This is clear? Yes, sir. बिना फोर्स के वो फ्लाई नहीं करेगा ना. वो फोर्स कहाँ से आ रहा है? विंड से आ रहा है, राइट? इवन द रूफ्स ऑफ सम हट्स fly away during a storm because the force of strong winds pushes them away. So these are some day-to-day life examples where we have to use force, right? Now we'll see what are the effects of force, right? A force, we cannot see the force. Force को हम लोग केवल feel कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते. So force can be judged only by the effects which it can produce in various bodies or objects around us. A force can produce the following effects. Number one, force can move a stationary object. जैसे टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, उसको हम लोग पुश किए हैं, we can move that stationary object. जब तक वो टेबल पे था वो स्टेशनरी था, right? So force can move a stationary body. And अगर कोई मूव कर रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, and for that also we required force. So force can stop a moving body, right? And अगर मान लो कोई साइकिल से स्पीड से आ रहा है, okay, if any your friend is moving with very high speed in a cycle, if you push him on from one side, then what will happen? The direction will be changed, the speed will be changed. Okay, a force can change the speed of a moving body, and similarly a force can change the direction of the moving body. Okay,
Now what will happen if I will uh, squeeze the rubber band or squeeze the cloth? Whether the shape will remain same or it will change? No. Yeah. Change. So that's what I want to say. The a force can change the shape also, size also. ठीक है, एक रबर बॉल को दबाओ, प्रेस करो. If you press the rubber ball, ठीक है, hollow, which is hollow spherical ball. I'm talking about hollow spherical ball. उसको प्रेस करोगे तो वो दब जाएगा. The shape will be changed. The size will be changed. Okay, so these are the effects of force. Now we are going to see the different types of force. So there are two different types of force. One is balanced and another is unbalanced. ठीक है, so पहले हम लोग बैलेंस फोर्स देख लेते हैं. So अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस पे वो फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, राइट. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर कोई टेबल पे रखा हुआ है तो भी उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है. आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है तभी वो स्टेशनरी है. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो वो स्टेशनरी नहीं रहेगा. Okay, so a body under the action of balanced forces does not change its position of rest and it appears as if no force is acting on it. अगर टेबल पे बुक रखा हुआ है तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, फोर डायरेक्शंस में. द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो. ओके, so that we will see with this example. Suppose a heavy box is lying on the ground, this figure. Okay, let us push this box with our hand. So what will happen? Heavy box क्या होगा कि वो मूव नहीं करेगा. मान लो 1000 किलोग्राम का बॉक्स है वो, अगर हम लोग पुश करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा. इट विल रिमेन इन द सेम पोजीशन, राइट. तो उस समय इस बॉक्स पे चार फोर्सेस एक्ट करेंगे. वन, द फोर्स ऑफ आवर पुश. First, force of our push, right. The second one is force of friction, this one. This is the first one, this is the second one, and the third one is force of gravity, the weight of the box, जो मैंने अभी 1000 kg बोल दिया था. And the fourth one is force of gravity, and the third one is fourth one is force of reaction, which is exerted by the ground. ये चारों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा तब वो स्टेशनरी रहेगा. दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर मान लो बहुत हल्का आइटम है, सपोज 2 kg. सो if you push that force will be greater than force of friction, so वो मूव करेगा, राइट. तो ये तो था बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स कब होगा? जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा. ये चारों फोर्स मिला के जीरो होगा. नाउ विल मूव टुवर्ड्स अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, तो वो बॉडी क्या करेगा? अपना पोजीशन चेंज करेगा, राइट. इज दैट क्लियर? When unbalanced forces act on a body, they produced a change in its state of rest or of uniform motion. अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, जो बॉक्स है, हल्का बॉक्स है, उसको हम लोग मूव किए तो वो वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि यू कैन इजीली पुश दैट लाइट बॉक्स. So in that case, the resultant force will not be equals to zero, and it will change its position. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. So that is Yes. unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. So हम लोग जब पुशिंग और पुलिंग की बात कर रहे हैं
we are talking about closing and opening the door in the first example. So that all regarding unbalanced forces, right? In other words, unbalanced forces acting on a body can change its speed or direction of motion, right? We'll see one example. Suppose a toy car is lying on the ground, right? Let us push this car with our hand. We find that the toy car starts moving. ओके, सो जब टॉय कार जब मूव कर रहा है तो उस समय भी उसके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट करेंगे. सी दिस इज द फिगर. एक तो है फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द सेम फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ द टॉय कार. ये वाला टॉय कार है तब वो मूव कर रहा है. अगर रियल कार रहेगा तो वो अकेला मूव कर पाएगा? No, sir. Suppose Ritvik is trying to move a real car, so it is not possible. क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स वहां पे जीरो हो रहा है. वहीं पे अगर 10 लोग जाके अगर पुश करेंगे तो वो मूव करेगा. क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है. सो हियर फर्स्ट इज फोर्स ऑफ आवर पुश, force of friction. The third one is force of gravity, that is weight of the car, and the fourth one is force of reaction of ground, right? So these are the this is the example of unbalanced force. Now we will move towards the main topic of our lesson, that is Newton's law of motion, right? So Newton has given 3 laws of motion: Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion. So in this session we will concentrate only on first law of motion. Okay, right? So let us start with the Newton's first law of motion. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, सपोज टेबल इज ऑन, बुक इज ऑन टेबल, वो जब तक वहीं पर रहेगा जब तक उसको हम लोग पुश नहीं करेंगे, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. अच्छा, अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ. नाउ वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, इसके बाद वो अनबैलेंस्ड ही है. सो आई एम नॉट स्पेसिफिकली विल टेल यू दैट unbalanced force. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. A body, मैं फिर से बता रहा हूँ, a body will be at rest only or remain at rest, and body when unless if we give the force to that body. Is that clear? या कोई बॉडी मोशन में है, अपने डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसी मोशन में चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. राइट. A body at rest will remain at rest. This is the line what I want to say. And a body in motion will continue in motion in straight line only with uniform speed, unless, अब यहाँ से start होता है, it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. इसमें 2 पार्ट है. वन इज बॉडी इज एट रेस्ट बोल रहा है, दूसरा पार्ट है बॉडी इज इन मोशन. मतलब बॉडी रेस्ट में जब तक रहेगा जब तक कि उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? जैसे बुक टेबल पे है, उसको मैं जब तक पुश नहीं करूँगा वो वहाँ से हिलेगा नहीं. बॉडी विल बी रिमेन एट रेस्ट ओनली. सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड में, वो तब तक यूनिफॉर्म स्पीड में उसी स्ट्रेट लाइन में जाएगा जब तक कि उसमें कोई फोर्स अभी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. I will tell you with one Yes, sir. brief. I will tell you again with the same example, that book example. Suppose a book is lying on the table. ठीक है? So we will say that it is at rest. Now you tell me whether book will move by itself. No, sir. No, sir. No, it will not move by itself. It cannot change its position by own, right? Okay. Now it can change its state of rest only when I will push or I will pull. दोनों केस, पुशिंग और पुलिंग की बात कर रहे हैं. That is force अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. So it can change its state of rest only when compelled by force of our hands. That is when we lift the book from the table or push the book or pull the book. This is clear? Yes, Yes, sir. sir. Then the position of rest of the book has been changed by the external force of our hands.
राइट? बुक तब तक कहाँ पे रहेगा? अपने पोजीशन में ही रहेगा, राइट? Okay, Yes, so sir. now we are moving towards one very important topic with respect to Newton's first law of motion, that is inertia and mass. Right. तो inertia क्या होता है कि the tendency of a body to remain at rest or if moving to continue moving in a straight line. So उस tendency को हम लोग inertia बोलते हैं. जैसे बुक वहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है, राइट? टेबल पे पड़ा हुआ है, तो टेंडेंसी ऑफ दैट बुक to remain at rest is inertia. This is clear? The definition is clear? Yes, sir. Or Yes, sir. inertia is that property of body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. Inertia is that property of a body due to which it resists, रोकता है वो अपना पोजीशन चेंज करने के लिए. सो वो उस प्रॉपर्टी, उस रेजिस्टेंस, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया, राइट? सो जितना इनर्शिया उसका ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज क्लियर? ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, greater will be the force required to bring a change in its state of rest or of uniform motion. Chalo, I will tell you one example. Suppose a book is lying on table and a box, heavy box, 100 kg box is lying on the another table. Now you tell me, inertia, whose inertia is more, the book or the box? Box. Box. Very good. So जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा और उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसका पोजीशन चेंज करने के लिए. दैट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So in fact, mass is a measure of the inertia of a body. जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास बहुत कम है उसका इनर्शिया कम होगा, right? In fact, mass is a measurement of the inertia of a body. This is very important point for this topic, right? Now I will give one example. One stone, okay, one stone is there in the shape of football, size also, size and shape of a football, and another is a football only, original football. Now if you kick on stone, full pure stone, whether it will move? No, sir. No, sir. Now why? Why it will not move? Because Inertia is more. Very good. Very good. It has a very high inertia because of its high mass. Right? Football का inertia कम है, बहुत उसका mass कम है. So it can easily move. Right? So if a body has more mass, it has more inertia. That is, heavier objects have more inertia than the lighter objects. This is clear? Yes, sir. So अभी जो example बताया तो वो यही वाला है. For example, a stone has greater inertia than a football. If we kick a stone, it will not move because of its high inertia. But if we kick a football, it will move a long way because it has a very less inertia. This is clear? Yes, sir. Yes, sir. So to overcome the inertia, what we have to do? We have to apply external force. ठीक है? अगर हाई इनर्शिया है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेस इनर्शिया है तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग कभी कभी गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. Okay, so now we'll see one more example with respect to inertia. Suppose we are taking a glass tumbler and place a thick square card on its mouth as shown in this figure. Right? Now a coin is placed above this card in the middle, जैसे figure में दिख रहा है. So let us flick the card hard with our finger. Right?
दोनों कर सकते हैं, फ्लिकिंग भी कर सकते हैं और खींच भी सकते हैं उसको, पुलिंग भी कर सकते हैं. So what will happen if you flick the Coin card? goes into the Right. glass. On flicking the card, what will happen? The card moves away, but the coin drops into the glass tumbler. Okay? Clear? Why this happen? Because of inertia. Right. Because of inertia. Now the second part of first law of motion, which says a body is in uniform motion will continue to move unless a force compels it to change its state of uniform motion in a straight line. This is the second part. अभी जो करने जा रहे हैं हम लोग second part करने जा रहे हैं. ये first part हो गया. Okay? So हम लोग इसके basis पे कुछ examples देखते हैं. So let us go through some examples which are based on the property of inertia of a body. अगर हम लोग कारपेट को मान लो हैंग कर रहे हैं, राइट, हैंग करके उसको जोर जोर से मारेंगे तो क्या होगा, उसका डस्ट पार्टिकल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट. व्हाई? व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट. व्हाई? सी, व्हेन वी beat with a stick, the force of stick will make the carpet move to and fro. ठीक है, slightly. लेकिन डस्ट पार्टिकल तो वहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट. डस्ट पार्टिकल विल रिमेन देयर ओनली. तो जब कारपेट टू एंड फ्रो करेगा तो डस्ट पार्टिकल वहीं रहेगा और वो नीचे गिर जाएगा. इज दैट क्लियर? दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट. Yes, sir. This is because the force of stick makes the carpet move to and fro slightly, but dust particles tend to remain at rest due to their inertia and hence separate from the carpet. This is clear? Yes, sir. Okay. अगर हम लोग ट्री को बहुत जोर से हिलाते हैं फ्रूट्स के, तो क्या होता है, फ्रूट्स गिर जाता है. ठीक है. व्हेन ए ट्री हैविंग फ्लेक्सिबल स्टेम मतलब जिसको हिला सके. बहुत बड़े बड़े ट्री को हम लोग हिला पाएंगे क्या? No, sir. No, sir. Okay. So it is shaken vigorously or heavily. So its fruits and leaves fall down. Why? अभी ये भी सेम एग्जांपल है. अगर हम लोग उसको हिला रहे हैं तो इट विल मूव टू एंड फ्रो, लेकिन फ्रूट्स तो वहीं रहेगा. Fruits and leaves tend to remain at rest due to their inertia and hence detached from the tree and fall down. You got my point? हम लोग जब उसको हिलाएंगे तो जो फ्रूट्स है वो उसके इनर्शिया की वजह से वहीं रहेगा, तो इसलिए वो ट्री से अलग हो जाएगा, अलग होके नीचे गिरेगा. See, this is due to the fact that when the tree is shaken, it moves to and fro slightly, but its fruits and leaves tend to remain at rest. Why? Because of its inertia and hence detached from the tree and fall down. This is clear? Yes, sir. Okay. Yes. We'll see one more example. Suppose when a car or when a bus starts immediately, suddenly, what will happen? What will happen? It starts moving. What will happen to the passenger? Even Falls they, backwards. Yes, very good. Passenger fall backward. When a car or a bus starts suddenly, the passengers fall backward. Why? Because of their inertia. ठीक है? The passenger tend to remain in their state of rest because of their inertia even when the car start. क्लियर है? इसलिए जब कार मूव कर रहा है तो पैसेंजर अपनी जगह पे ही है बिकॉज ऑफ इट्स देयर इनर्शिया. वो अपनी जगह पे, इसलिए वो दे फॉल बैकवर्ड. सो दिस इज द फिगर. अगर मान लो कार या बस सडनली स्टार्ट हो गया तो जो बॉडी है, द पैसेंजर है, द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन
they stayed only. Okay, even when the car or bus has started moving, that is why they fall backward. Clear? Now Yes, sir. reversely, that means conversely, when a running car or running bus will stop suddenly, what will happen? The passengers are jerked Will fall forward, front. right? So why? Because this is also due to their inertia, because the passenger tend to remain in the state of motion. पहले state of rest था, इससे पहले वाले में, यहाँ पे state of motion है, which they possessed when with the moving car or moving bus, right? तो जब कार रुक जाएगा तो वो मोशन में ही रहेगा उसका बॉडी, बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, इसलिए वो सामने आ जाता है. सी, सडनली स्टॉप हो गया तो इस डायरेक्शन में पैसेंजर मूव कर रहा है. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. जो इससे पहले वाला जो एग्जांपल था वो स्टेट ऑफ रेस्ट था, which they possessed in a moving car or bus, even though the car or bus has come to the rest. This is clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, हम लोग कार में ड्राइव करते समय सीट बेल्ट यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि मान लो हम लोग ड्राइव करते बहुत फास्ट जा रहे हैं, सडनली ब्रेक मार दिए, तो वो सीट बेल्ट जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है सामने जाने के वजह, सामने गिरने से. Right? The seat belts are provided in cars so that if a fast running car stops suddenly due to some emergency or an accident, then the passengers are not thrown forward violently. देखे होंगे फिल्मों में जब कार सडनली रुक जाता है या एक्सीडेंट होता है तो वो सामने जो कांच रहता है उसमें से बाहर आ जाता है जो ड्राइवर. हैव यू सीन दैट सीन? Yes, sir. हाँ, तो अगर मान लो सीट बेल्ट है तो ये सीट बेल्ट जो है वो पूरा उसको रोक देगा सामने गिरने से, राइट? The seat belts are provided in cars so that if a fast running car stops suddenly due to some emergency or an accident, then the passengers are not thrown forward violently and injury can be prevented. So this is very important. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सीट बेल्ट लगा के चलो करके. Right. Now we'll see one more example. When a car or a bus turns a corner sharply, क्या होगा? तुम लोग वहीं पर रहोगे कि what you feel? We tend to fall sideways. कभी ऑब्जर्व किए हो? Yes, sir. Right. Yes, sir. Why? Because this is also because of inertia. So this is because of our inertia or tendency to continue moving in a straight line. अगर मान लो हम लोग straight जा रहा है, सडनली लेफ्ट टर्न ले लिए तो हम लोग राइट की तरफ सामने आ जाते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस, बिकॉज द जंपिंग मैन हु इज मूविंग विद द हाई स्पीड ऑफ द बस would tend to remain in motion due to inertia, even on falling to the ground, and get hurt due to the resistance offered by ground, right? So this is the theoretical concept based on Newton's first law of motion. In the second session we will continue with the Newton's second law of motion. So let us solve some multiple choice questions. Let us start with the first question. When a toothpaste tube is squeezed, its shape changes. The force responsible for this is an example of. अभी हम लोग जब टूथपेस्ट को स्क्वीज करेंगे, the position of toothpaste will remain same. उसका शेप चेंज होगा केवल, और उसमें हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. So the correct option is A. Next one, the inertia of an object tends to cause an object dash to increase its speed, to decrease its speed, to resist a change in its state of motion, to decelerate due to friction. Which is the correct option? Right, to resist a change in its state of motion. Third question, when we talk of a force acting on a body, it usually means unbalanced force, right? Fourth one, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. उसके पीछे गिर गया. This shows that the motion of train is dash, accelerated, uniform, retarded. Yes, the correct answer is accelerated. Fifth one, when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it
This phenomenon can be best explained by making use of dash. Newton's first law of Right. Newton's first law of motion. Sixth question. A water tanker filled up to 2/3 of its tank with water is running with a uniform speed. When the brakes are suddenly applied, the water in its tank would move backward, move forward, rise upward, remain unaffected. Move forward. Move forward. Right. Seventh question. If we release a magnet held in our hand, it falls to the ground. मतलब उसका state of position change हो रहा है. The force which makes the magnet fall down is an example of unbalanced force. Right. Now, next question. The inertia of a moving object depends on dash. Mass of the object. Right, mass of the object. When a rubber balloon held between the hands is pressed, its shape changes. This happens because इसमें जब हम लोग press करेंगे तो वो वहीं रहेगा. It is in stationary only. Only the shape will change. So the correct option is balanced forces act on the balloon. Now the last question. Which of the body effect cannot be produced by an unbalanced force acting on a body? So change in speed change होगा unbalanced force से, direction भी change होगा, state of rest भी change होगा. So the correct option is B, change in shape of the body. So this is the first session of the physics class, chapter number 9. So we'll continue with the Newton's second law of motion in the second session tomorrow morning. So that's all for today's session. Thank you very much.